Hello students, I welcome you all on the online study platform of Sri Academy. Students, in the series of our prose section, today we should learn our second chapter, that is the sound of music. And this chapter has two parts. Part first deals with a young girl's story, her love for music, and the second part deals with Bismillah Khan's love for music. Now come to the first part. At first, before coming to the chapter, we should know about writer, and the writer of this first part is Deborah Cowley. Deborah Mashon Cowley is a freelance writer and broadcaster. She grew up in Toronto and she graduated from the University of Western Ontario and moved to Canada to work for Unitarian Service Committee. She spent 2 years with UNHCR, that is United Nations Relief and Works Agency, in Beirut before moving back to Canada and a job with CEDA. As she traveled the world with her diplomat husband, she worked as a reporter for CBC Radio in Washington, D.C. and on a posting of Cairo. She worked on several television documentaries for CBC's Man Alive. Also in Egypt, she wrote the first official guidebook to Cairo since Baedeker's Guide in 1940s. डेबोरा कॉले एक कैनेडियन राइटर है जो कि फ्रीलांस राइटर है और ब्रॉडकास्टर मीन्स न्यूज़ प्रेजेंटर भी हैं. ये टोरंटो, दैट इज़ अ सिटी इन कनाडा. शी ग्रू अप देयर इन टोरंटो एंड graduated from Western Ontario University, and then she moved to Ottawa for work, and Ottawa is the capital of Canada. And after that she works with UNHCR, that is means agency of United Nations, in Beirut. Beirut is the capital of Lebanon. Before moving back to the Ottawa, she had done job with CETA, and she had traveled with her diplomat husband, और वो अपने डिप्लोमेट हस्बैंड के साथ पूरे वर्ल्ड की टूर की हैं. और इन्होंने रिपोर्टर के CBC रेडियो में रिपोर्टर के रूप में भी वॉशिंगटन DC में वर्क किया है. उसके बाद कैरो मीन्स इजिप्ट में भी वर्क किया है. एंड आफ्टर दैट शी रोट अ बुक that is called Baedeker's Guide in 1940. This is about Deborah Cowley. And here come to the story. At first we should know about the characters. Characters are like the actors in film. As the film go through the actors, likewise story runs through the character. जैसे फिल्म में हीरोज़ हीरोइंस इन सब एक्टर्स के द्वारा पूरी स्टोरी टेल की जाती है, उसी तरह एक रिटन स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं जिनके द्वारा पूरी स्टोरी रन करती है. एंड द वेरी फर्स्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द हीरोइन ऑफ द स्टोरी इज Evelyn Glennie. She is a deaf young girl. Deaf means behra, means जिसको unable to listen any sound, unable to hear the sound. So Evelyn Glennie is a deaf young girl of who senses music. Here this off is wrong, off is not used here. So Evelyn Glennie, a deaf young girl who senses music with her body parts and becomes one of the best precionists of her time and won a lot of prestigious awards. Evelyn Glennie जो है वो एक deaf girl है जो म्यूज़िक को, her passion is about music, but through the disability to listen, to hear anything, she starts sensing music with her body parts and becomes one of the best
परसेशनिस्ट मीन्स इंस्ट्रूमेंट प्लेयर वो, और एक बेस्ट तबला, जाइलोफोन, इन सब को बहुत अच्छे से प्ले करने वाली एक बेस्ट म्यूजिशियन बन गई और अपने समय में जितने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स थे उन सब को उसने जीता अपने सेंस ऑफ म्यूज़िक, अपने लव फॉर म्यूज़िक के कारण। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। दिस इज इसाबेल ग्लेनी एंड सी इज Evelyn's mother. Next character is Ron Forbes, Evelyn's teacher. These are the prominent characters in the story. Now come to the theme of the story. That is the summary of story. And the story is about young deaf girl who has great love for music, but her disability with the loss of listening capacity becomes the obstacle in it. But in the guidance of a teacher, that is Ron Forbes, she starts sensing it through her body parts, and by her workaholic nature, she becomes the best musician in her life, in her time, and becomes the source of inspiration for a lot of people like her. Workaholic nature means हमेशा काम, it's workaholic is a informal word which is used in speech only, not for writing, but here it was mentioned in the story, that's why I have used this word. And workaholic means जो हमेशा काम करने के लिए उद्यत हो, हमेशा काम, a person who loves work, who loves to more and more work. And through the story of Evelyn, writer tries to show that any physical disability could not become more higher than one's firm belief in herself or himself. The moral of the story is that nothing is impossible for human being, and the true love for anything have the capacity to clear every barrier in the path, and finally that faith takes one to his or her goal. So, what's the summary of the story? एक जो कि एक पैशनेट लवर ऑफ म्यूज़िक एवेलिन, जो कि अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में ही सुनने की क्षमता को खो बैठती है, लेकिन उसका जो म्यूज़िक के प्रति लव, उसका म्यूज़िक के प्रति जो प्यार है उसे बहुत और स्ट्रॉन्ग करता है, और वो बजाय अपने कानों के म्यूज़िक सुनने के वो अपने पूरे शरीर के अंगों के द्वारा म्यूज़िक सुनने लगती है, म्यूज़िक को महसूस करने लगती है। एंड without hearing her music, she plays the best as ever one can plays. So what's the moral of the story? तो इस कहानी का मोरल क्या है कि कोई भी फिजिकल बैरियर या फिजिकल डिसेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हमारी इच्छाओं को रोक सके। ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतना इमेंस पोटेंशियल है कि वो किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी को मात दे सकता है, और अपने बशर्ते कि वो एक सही गाइडेंस और सही रास्ते पे हो, वो अपने लक्ष्य तक निश्चित ही पहुंचेगा, और निश्चित ही पहुंचता है, जैसा कि एवेलिन पहुंचती है। नाउ कम टू द चैप्टर। सो हियर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट 1? एवेलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it. एवेलिन ग्लेनी सुनती है बगैर साउंड को सुने हुए, मीन्स साउंड को महसूस करती है बगैर अपने कानों से इसे सुने हुए। सो बिफोर यू रीड, नो सम फैक्ट्स। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. भगवान उसके सुनने की क्षमता को छीना है, लेकिन उसके बदले उसे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसे बहुत ज़्यादा असामान्य बना दिया है। जैसा कि हम म्यूज़िक को सुनते हैं, लेकिन वो इसे फील करती है, और वो हमसे कई गुना ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। और बिकॉज ऑफ हर डीप फीलिंग, बिकॉज ऑफ हर फीलिंग ऑफ म्यूज़िक, शी एक्सप्रेस इट मोर ब्यूटिफुली, और अपने इसी सेंस के द्वारा वो इसे बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करती है।
and read the following account of a person who fought against physical disability and made her life a success story. और इस कहानी में हम पढ़ेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने फिजिकल डिसेबिलिटी, जो अपने शारीरिक अक्षमता को मात दे करके अपने जीवन को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में बदलती है. नाउ कम टू द स्टोरी लाइन्स. Rush hours, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Rush hour means the morning time or the evening time when every people are busy in going office, like 10 o'clock, 8 to 10 o'clock. This is called rush hour. Why? Because everyone because everyone has to reach on their workplace. That's why the whole traffic is in the condition of jam, and only all the rush seen in the roads. So these hours are called rush hours. मीन्स बहुत भीड़ भाड़ वाली समय. जैसे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच जो होती है, हर एक व्यक्ति को जाना है बाहर उसके काम की जगह, और शाम को वहीं 5 से 6 बजे का टाइम जब सब लोग वापस आने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रश आवर्स. जॉस्टल मीन्स पुश रफली, जहाँ रश आवर में क्राउड जॉस्टल करती है, एक दूसरे को पुश करती है. एंड इसी समय फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, और ये एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में एक स्लाइट गर्ल है जो कि एवेलिन खड़ी है, और लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो 17 ईयर्स की है लेकिन उसे छोटी देखने में लगती है. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, नर्वस है और एक्साइटेड भी है. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, मीन्स ट्रेन के आने की आवाज़ को वो सुनती है और वो नर्वस है. वाई सी इज़ नर्वस? Because it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Because this is the first day of her for going, means this is the first day of her to the prestigious Royal Academy of Music in London. ये उसका आज पहला दिन है जाने का Royal Academy of Music में. So because of that she is slight nervous, and she is a teenager. Daunting enough means frightening. She has a frightening, थोड़ा डर भी है उसे क्योंकि वो आज उसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी में. That's why she has some frightening like a teenager, and she is a Scottish girl. But this aspiring musician फेस्ड अ बिगर, लेकिन जो ये उभरता हुआ म्यूजिशियन है वो एक बिगर चैलेंज फेस कर रहा है. एंड व्हाट इज़ द चैलेंज? सी मोस्ट प्रोफाउंडली डीफ, वो पूरी तरह से बहरी है. सो इट वॉज मीन्स राइटर स्टार्ट्स द स्टोरी with her first day when she is stand on the platform on the railway station where she is waiting for a train for going to the Royal Music Academy in London. Now, in the next paragraph, in the second point, the writer tells about the story how Evelyn Glennie lost her hearing. So Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. Evelyn Glennie जो है वो धीरे धीरे अपने सुनने की क्षमता को खोती है, और उसकी माँ को वो याद करती हैं कि कैसे वो धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया उन्होंने कि कुछ तो गड़बड़ है. क्योंकि जब वो 8 इयर्स जब इवेलिन 8 ईयर ओल्ड थी, तब जब वो
पियानो प्ले करती रहती थी बैठ करके, और उसकी मदर जब उसे कभी आवाज़ देती थी, सी कॉल्ड हर नेम इवेलिन कम, बट सी नेवर रिस्पॉन्ड, मीन्स उसे कुछ सुनाई नहीं देता था वो, और वो कुछ मूव भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, वो उसका नाम बुलाते थे लोग, लेकिन वो मूव भी नहीं करती थी। क्यों? वाई सी डिडंट मूव? बिकॉज सी वॉज gradually losing her listening capacity. I suddenly realized she had not heard. Her mother is Isabella Glennie, and she is saying that I suddenly realized she had not heard. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. बट कुछ समय के लिए इवेलिन जो है वो मैनेज कर लेती है, कंसील मीन्स छिपाना या चुराना, वो अपनी इस डीफनेस जो बढ़ता हुआ उसका लॉसिंग हियरिंग कैपेसिटी है, जो सुनने की उसकी क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, उसको किसी तरह से वो अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपाती है। बट द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parent to take to a special school. मीन्स कि जब, लेकिन कुछ समय बाद ही जब वो 11 ईयर की होती है तो वो ये छिप नहीं पाता, लोग जान जाते हैं कि सी हैज़ लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी एंड दिस इज सीन इन हर डिटेरियोरेटिंग मार्क्स, एंड देन her headmistress, her principal, asked to her parents to take her to some special school or some specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये जब डॉक्टर के पास वो जाती है, जब डॉक्टर के पास जाती है तो वो क्या डिस्कवर करते हैं कि सी हैज़ लॉस्ट हर हियरिंग, impaired means weakened, her hearing capacity is weakened, and that is the result of a gradual nerve damage. उसकी कोई nerve जो है वो damage हो गई है, and because of that she had lost the capacity of hearing. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं उनके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को कि वो उसे ऐसे स्कूल में एडमिट करें जहाँ डीफ बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवेलिन, और इवेलिन फिर बोलती है कि और उस समय हर चीज़ उसके लिए, सारा सब सडनली अचानक उसके लिए एवरीथिंग इज़ ब्लैक, मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ, शी इज़ फेसिंग अ लॉस ऑफ होप एवरीवेयर. That's why she says, she means suddenly everything starts looking black. And the next para, third point, but Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन Evelyn ऐसा नहीं, वो छोड़ने वाली नहीं थी. वो डिटरमाइंड थी एक नॉर्मल, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एंड अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए. वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone, हियर इट इज़ इन द इमेज, एंड xylophone इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. ये लाइक इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, it is made of wooden, and here two sticks are made on that. It is used for play, it is an instrument. So one day Evelyn noticed that a girl playing xylophone, and then she decided that she wanted to play it too. और Evelyn उसे देखती है, फिर वो भी चाहती है कि वो भी एक xylophone बजाए. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential, and when she shows her interest in playing xylophone, most of the teachers of the school discouraged her. No, you don't have the potential, you can't do it, you can't play it because you are not able to listen. How can you play? But a teacher in that school means a percussionist means a person who plays the drum, the tabla, etc. So the percussionist रॉन फोर्ब्स जो वहाँ एक टीचर है,
परकुशनिस्ट है, वो स्पॉटेड पोटेंशियल इन हर, वो उसके अंदर उसके अंदर क्षमता देखते हैं. एंड he began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your eyes. और वो दो डिफरेंट ड्रम्स के थ्रू उसे सुनाते हैं म्यूज़िक और बोलते हैं डोंट लिसन थ्रू योर आइज, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो. ही शुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे अदर वे से सुनने की कोशिश करो. सेज इवेलिन. सडनली, फिर इवेलिन क्या कहती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और उसके बाद इवेलिन बोलती है कि सडनली क्या हुआ, वो जो तेज ड्रम की आवाज़ थी उसको वो अपने हायर वेस्ट से ऊपर मीन्स कमर से ऊपर के बॉडी में फील करने लगी. और जो लो पिच वाला ड्रम की आवाज़ थी, जो लो साउंड ड्रम था, उसकी आवाज़ को वो अपने वेस्ट डाउन टू हर वेस्ट पार्ट से वो महसूस करने लगी, अपने कमर के नीचे वाले भाग से महसूस करने लगी. एंड नेक्स्ट इज फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून, और ऐसा ही फोर्ब्स बार बार करते रहे. एंड सून इवेलिन could discover that she could sense certain notes in different parts of her body. और ऐसा ही बार बार प्रैक्टिस करने के बाद what Evelyn feels that she can feel the different beats of music with the different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. What Evelyn said, and she had learned to open her mind and body to sounds and vibration. वो धीरे धीरे साउंड के वाइब्रेशन को महसूस करने लगी अपने डिफरेंट पार्ट्स, और अपने माइंड और सोल को ओपन करके, सोल मीन्स आत्मा, और अपने आत्मा से म्यूज़िक की आवाज़ को सुनने लगी. और आगे ये कैसे बढ़ा, बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हर हार्ड वर्क. She never looked back from the point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, और उसके बाद वो कभी फिर पीछे नहीं देखी, हमेशा ही आगे बढ़ती रही. उसने टूर किया यूनाइटेड किंगडम में विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड द टाइम, और उस समय वो 16 ईयर ओल्ड थी. And when it was discovered that Evelyn had lost her capacity to listen, that was on her 11th year, and now she is 16-year-old, means with the time of 5 years she had learned the music as higher that she can be the part of orchestra, and she has toured a lot of places to perform her music. She had decided to make music her life, और उसने म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाने को सोचा. She audition means gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. You have also listened that in films that they give auditions, so audition is this. And for the she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और वो रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन देती है अपने म्यूज़िक का, और अभी उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाली स्टूडेंट बनती है. एंड she gradually moved from orchestral work to solo performances. Solo performance means single performance. Orchestral performance means where a group of persons used to perform, and solo is single performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और उसके इस 3 year के कोर्स में उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जीते. और देखो, look, the starting of the story is from this point where Evelyn was selected for the Royal Academy of Music, and she is waiting for the train
which is going to approach and for her first day at that academy, and the story starts from that point. And now come to the fifth. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के लिए वो इवेलिन नहीं बोलती कि कोई इसके लिए heroic achievement है उसका. If you work hard and know where you are going, you will get there. This is the key line of the whole chapter. If you work hard and know where you are going, you will get there. अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी लक्ष्य के लिए कठिन मेहनत करते हो और जानते हो कि आप सही रास्ते पे हो, तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाओगे, अपने लक्ष्य को आप ज़रूर प्राप्त करोगे. एंड दिस इज़ द होल की आर थीम ऑफ द स्टोरी. एंड सी गॉट right to the top, the world most she got after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो अपने इसी प्रैक्टिस के द्वारा through her lot of practice, through her hard works, she become the champion of all the international platforms and get mastery in more than 1,000 instruments. And she was very busy in the hectic international schedule. Means every time she is busy, she has a schedule to play on some international stages. And now come to the sixth. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with a bushy beard give me trouble. She laughed. और वो जो ये डिस्कशन है, दिस स्टोरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ राइटर with Evelyn. It's a 2-hour discussion with Evelyn, and on the basis of that experience, writer has wrote this story. और इस 2 घंटे की बातचीत के बीच इवेलिन किसी भी वर्ड को मिस नहीं करती है. वो बहुत ही सी इज़ अ फ्रैंक स्कॉटिश स्पीकर. सी इज़ अ फ्रैंक स्कॉटिश स्पीकर. सी हैज़ गुड वॉइस. एंड नाउ और वो ये कह के लाफ करती है कि द मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. एंड द मैन हु इज़ बिजी इन डिस्कशन विद हर, that she laughs that he is troubling her. Here, see the picture. This is the picture of Evelyn, how she is playing her music. And come to the lines. Not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lit. Lit means a way of speaking. So she speaks flawlessly. Flawlessly means without any fault or mistake. So my speech is clear because I could hear till I was 11. She says, क्योंकि मेरी स्पीच क्लियर है, वो बताती है, because she was here till she was 11 years old. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. And because of her disability, she has not given up, and she tries to learn other languages too. And she has a mastery of French and basic Japanese also. As for the music, she explains, it pours in through every part of my body. She tells that music is the one thing that is poured in every part of my body. Means music, मेरे कण में म्यूजिक है, मेरे शरीर के हर एक कण में म्यूजिक बसा है. It tingles in the skin. और ये tingles means cause of slight prickling or stinging sensation. वो थोड़ा सा थरथराहट ये tingles करता है मेरे स्किन में. My cheekbones and even in my hair. म्यूजिक जो है वो हर जगह है, मेरे स्किन में, मेरे cheekbones में, मेरे हेयर में, everywhere music is spread in my whole body. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips.
जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो सेंस करती है कि कैसे साउंड पास कर रहा है थ्रू हर स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, अपने उसकी अंगुलियों से कैसे पास कर रहा है साउंड बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस flowing into her body. Resonance means echoes of sound, and while playing the drum, she also sense the sound of the resonance of the echoes of sound through her body parts. She can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. Bare feet means nange pav, means when she starts playing her xylophone or her other instrument, she removes her shoes and becomes and sit bare feet and try to sense the music, the sounds. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. और ये कोई सरप्राइज नहीं है, एवेलिन बहुत ही प्रसन्न चित्त करती है अपने ऑडियंसेस को, जो सुनने वाले लोग हैं. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी. In 1991, she presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award, और ये इस अवार्ड को वो जीतती है. Says Master Percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और फिर देखो यही स्टार्ट हुआ था इसी से. बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर वी हैव डिस्कस दीज लाइन्स कि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है इसके बदले में. वट वी हियर सी फील्स, और जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है. फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और उससे कहीं जितना हम महसूस कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं गहरा वो महसूस करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, and because of it she expresses music, because of her deeper feeling, because of her great feeling, because of her great sense, she present music more beautifully than any of us. Come to the 9th point. Evelyn confessed that she is something of a workaholic. Workaholic means it is an informal word. It is informal word using informal word means the word that is not proper, you can't find it in dictionary but it is used in speech. जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स हिंदी में बोलते हैं जिनकी डिक्शनरी मीनिंग नहीं होती, लेकिन हम यूज़ करते हैं, वो हमारे भाषा के पार्ट होते हैं, वो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं. एंड वर्कaholic means a person who finds it difficult to stop working, means a person who is very much busy, very much engaged in work, and he or she is a passionate lover. So Evelyn is a workaholic, means Evelyn has a great passion for work. I got to work, और मैंने यही पाया वर्क करना सीखा है. often harder than classical musician, और मैं उनसे भी हार्डर वर्क करना चाहती हूँ, उनसे भी कठिन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे उनसे भी कठिन परिश्रम करना चाहती हूँ. बट द रिवार्ड्स आर इनॉमस, लेकिन उसके बदले जो मेरी इस कठिन मेहनत के कठिन परिश्रम के बदले जो अवार्ड्स मुझे मिला है वो इनॉमस है, मीन्स अनकाउंटेबल अवार्ड्स है. अवार्ड इज़ नॉट ओनली द फिजिकल अवार्ड दैट इज़ द प्राइजेस, बट द सेंस ऑफ म्यूजिक मीन्स द क्वालिटी शी गेट्स, दैट इज़ इनॉमस. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians, and Richland of the Beethoven found the deaf children, says she is the shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. और वो अपनी म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स के अलावा फ्री म्यूज़िक प्ले करती है हॉस्पिटल्स में और बहुत प्रिजन्स में और बहुत जगहों पे, और
यही नहीं, वो अपने छोटे जो बच्चों की क्लासेस लेती है उसको भी बहुत प्रायोरिटी देती है. और एंड सी एंड अ पर्सन एंड रिचलिन says that for deaf children, the person of disabilities, she becomes the inspiration for the person who have physical disabilities, and she becomes the source of inspiration for them, not only for the disabled people but for the able people also. She become the source of inspiration that they can do anything, they can achieve anything if they have a firm belief in themselves. अगर किसी भी व्यक्ति में अदम्य साहस है, किसी चीज़ को कर जाने की बहुत बड़ी क्षमता है उसके अंदर, अगर बहुत चाहत है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन और फॉर अ ह्यूमन बीइंग. And come to the last 10th point. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. और Evelyn Glennie जो है, because of her means despite her disabilities, she has achieved more than her age, more than of her age means twice of her age. जितना उसके दुगने उम्र में लोग अचीव करते हैं उतना इवेलिन ने अभी अचीव कर लिया है. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. Handicapped means a person of disability. Handicapped people who look to her and say, if she can do, I can do. मीन्स वो सारे हैंडीकैप्ड जो भी जितने भी डिसेबल या जितने भी लोग हैं, सी बिकम्स द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम. एंड for and after seeing her playing music, after seeing her success, every person says that yes, if she can do, I too can do it. And not the least, she has given enormous pleasures to million. और यही नहीं, उसने हजारों मीन्स लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून दिया है. And this is the whole story. This is the end of story. And what's the moral of story? That human beings have the immense potential. They can do anything what they want, but for achieving that, you must have to do the work harder and harder. And because of your hard work and because you're on right track, you can achieve what the goals you have set for your life. Come to the question answer. So first question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? So she was 17-year-old. And when was her deafness first noticed? And when it was confirmed? So it was first noticed by her mother at the age of 8. And when it was confirmed? So it was confirmed in 11th year of her age, means in her 11th year. Now second is, answer each of these questions on a short paragraph, means 30-40 words. So who helped her to continue with music? So it was her teacher. What's his name? His name was Ron Forbes. Ron Forbes was the person who helped Evelyn in continue with music. And what did he do and say? He helped her. He watched immense potential in her and say that don't try to listen music through your ears, but try to feel it. And then she starts feeling. Name the various places and causes for which Evelyn performs. So Evelyn performs in the different concerts of international stages and for hospital for prisoners. And next is third, and the first of third part is, how does Evelyn hear music? So in the previous points it was very much clearly mentioned that Evelyn hear music through her body parts, and the higher beats she
feels with the upper part of her waist, and the down beats means the lower beats see images or see senses through her down part of her down part of her body, and her through the hairs, through her fingertips, through her feet, through her bare feet, through her whole body she starts enjoying music, she starts sensing music. And this is all. Okay, this is the task for today. So do the task and send all the what is written in it, make the PDF of it and send to your WhatsApp groups. And this is all for today. So thanks, have a nice day.